Good evening to all of you and wish you a very happy Navratri to all of you. So here we have joined, or rather you have joined to go through the course arranged by the Profound Edutech. So this is a free online course which is on data structure arranged by Profound Edutech. So you can visit to our website, which is www.profoundedutech.com. Okay. So I will give an introduction about a Profound Edutech. First I will give my introduction to all of you. My name is Neha Kulkarni. I am currently working with Profound Edutech as a senior technical trainer. So Profound Edutech is established in the year 2013 and headquartered in Pune. So it is Pune's leading IT training and placement company. So the services offered in the areas are, we provide services in IT retail trainings, college trainings, corporate trainings and placements. So we have 5+ training centers in Pune and Nashik. So we have 5 lakh plus student connect, 3,200 plus client connect we have, 1,000 plus associated colleges connect we have, 10,000 plus campus drives we have arranged so far. Now, in the today's world, freshers face some challenges. Okay, some of the challenges are mentioned over here. So, high competition for entry level jobs. So, as you know, today there is a competitive work. Nowadays, it is a competitive world. So, to get a entry level job, you need to work hard. Okay, so every year, lakhs of graduates enter the IT job market, making it highly competitive. Standing out amongst the candidates with a similar qualification is difficult. Okay, so now you can see, so there are so many degrees like MCA, BCA, BBA, BE, BTech, ME, MTech. So many students are acquiring those particular curriculum, graduation, post graduation, and still they are unable to get the job. The reason is first, lack of industry ready skill. So many freshers lack in hands-on exposure to industry tools, frameworks, and project experience. So as we know, we learn so many languages. Like if you are from a technical background, we learn C language, Java, Python, different front-end related languages like HTML, CSS, Angular, Bootstrap. So many things we learn during graduation and post-graduation. But still, we are unable to get the job. So what is the reason behind that? The reason is you know the basics, but you don't know how to implement it, where to implement it. You don't know, you know the programming language, right? But you don't know the frameworks. Okay, you don't know the project exposure, or you haven't worked on any project, right? That might be the case. Then academic knowledge without practical skills. So we have theoretical knowledge. You suppose you got a distinction or आपका CGPA score होगा 9+, 8+ or something like that. But theoretically you know everything, but practically you are lagging behind. So knowledge is often limited to theoretical learning while companies expect job ready skill. So companies क्या expect करते हैं कि you should be ready directly to get the job, या आपको मतलब join किया है तो immediately you should be able to start working. Obviously they will provide some training, but still what they expect कि हाँ 1-2 महीने के ट्रेनिंग में आप directly काम करना स्टार्ट करना आना चाहिए. ठीक है. Then lack of soft skills. So some of the candidates face this problem. They are technically sound, they know everything, but they are unable to express, unable to explain. Okay, so that is a lack of soft skills. So weakness in communication, teamwork, group discussions, and business writing reduces chances of clearing interviews. And confidence issues often show up during a technical or HR rounds. Now, to overcome these challenges, what we provide job guarantee courses. So we provide courses in data science, in full stack Java, and in software automation testing.
So in data science, we cover the AI ML, artificial intelligence, machine learning, and Python, NumPy, Pandas. So whatever required for data science, we cover that. In full stack Java, we covered both front end, back end, right? And we give a project experiences also. Okay. So we provide the knowledge of HTML, JavaScript, React, CSS. This is front end related things, and Spring Boot framework is also there. So core Java, advanced Java, and framework is also covered in full stack. And in software automation testing, we cover manual testing, automation testing. In automation testing, we cover Selenium, Cucumber, Postman, Jira tools, Salesforce testing, DevOps concept is also covered, right? So now if you see, during your graduation, post graduation, you might have learned these technologies. या इसका आपको small थोड़ा introductory session introduction होगा, but the depth in depth knowledge you will get over here if you join the courses. Now the course will be of total 10 months. 4 months will be the rigorous training and 6 months will be a project based learning. So you need to get internship. So what a job guarantee courses offers? First, it bridges skill gap. So it aligns freshers with the market needs. So many students are passed out. Okay, then still they are unable to get the job. Why? Because they are not as per the market standards. They know the basics, but they don't know how to implement it, where to implement it. Then it boosts the confidence. So it is focused efforts on the employability skills. So employability skills like good communication skill, interpersonal skill. Then financial security, which is ROI driven investment in a career. So ROI means return on investment. So आप invest करोगे तो आपको क्या return मिलने वाला है? That is a financial security. So if you invest in a course for 10 months, obviously what you will get? You will get a job. You will get a good career. Then industry trust. Employers value guaranteed programs. Then faster employability. It shortens the job hunting cycle. So obviously if you don't pursue any course या सिर्फ आप as a fresher job search कर रहे हो, then it will be difficult for you to get a job, right? So if you go through such a courses, it will be helpful for you to boost your career, or to you will get a more calls, okay, or you will get a pathway to start your career. So our popular courses for retail training. So we provide courses in C, SQL, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, front-end development technologies, then the React, Angular JS, Express.js, Node.js, MongoDB. Okay, so we provide courses in Java, full stack Java, as already I have mentioned. We do provide courses in .NET also, in which we cover a .NET Core, ASP.NET, Web API. Then in Python, we cover Python and Django framework. Okay. So other popular courses for retail training. This is a full stack web developer, software testing, and data science and data analytics. Now there is a difference between retail training courses and job guarantee courses. So for retail training courses, the course duration will be less and the internship duration will be also less. Okay. Now, what is our training methodology basically? So there is a concept class, then hands-on lab, mini projects, employability skills, and placement grooming. So first of all, you will be able to learn the concepts. So learn technology concepts from experienced trainers, expert trainers. Then implementation show with the demonstration. So you will be able to attend the class, live class. So you can have a class in offline, online, both the modes, any mode. Then for the class which you have gone through, you will be having a hands-on lab.
So solve the programming assignments in the lab under the guidance of a lab trainer. So whatever topic you will learn today, the same lab you need to do in the lab sessions. So you will solve the assignments and problems. Okay, and there will be a lab trainer who will guide you. Then we have a mini projects. So you will be able to work independently on a project related task. So get them reviewed, work on the improvement. So for the mini projects, you will work individually. Your work will get reviewed by the experienced trainers or the superior seniors, and the work will be improved, or you can do improvement on your work. Then employability skills, so attend aptitude and soft skill sessions in parallel to get prepared for campus drive. So obviously, as you know, for campus drive, for big MNC companies, you need to attend the GD round or aptitude round. So for that, you must be prepared with these round, because this is a initial level or first round. Okay, अगर आप यहीं पे reject हो गए, you won't be able to crack the further round. So ये आने के लिए मतलब, if you are very sound in technical skills, assignments, labs, you have done mini projects, everything you have done, but if you are lagging in soft skill and aptitude, you won't be able to go ahead further to crack the further levels of the interviews. Then placement grooming. So solve weekly practice test, technical mock interviews will be there, GD round will be there. So we have frequent and rigorous placement grooming sessions. So in which we conduct a practice test, we conduct a technical mocks, we have a GD rounds. And after completing all these things, you will get a certificate. So which you will appear for a final examination and you will get a certificate, and then you will be a certified whether if you go for data science, Java, or testing track, you will be a certified tester, developer, okay, or data science engineer. Apart from this, we will have a regular progress and evaluation and assessment. So just enroll किया class के लिए और हो गया job मिला, ऐसा नहीं है. Obviously you need to give your efforts, dedication. So for that we have a frequent evaluations. We do conduct mock interviews, we do conduct mock tests. You will have a frequent assessments, and we make you job ready basically. So retail training highlights which I will give: project based learning. So structured projects to include open-ended problems, research, analyze and propose solution. It encourages critical thinking and problem solving. Internship and project guidance. So feedback to the students on their project task. Experiential learning to redefine their work. Identify areas for improvement. Deepen the understanding of IT concepts. So internship में आपको basically क्या मिलेगा कि आप कहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किस एरियाज में आपको और ज्यादा वर्क करना है, ये फीडबैक आपको मिलेगा फॉर दी एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग, सो एप्टीट्यूड एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग along with the technical. So regular mock GDs, interviews, presentations you will have. MNC based mock tests, coding tests we will be conducting here. Then trainers with the blend of skills, knowledge and personal qualities. So we do have a experienced and senior trainers. So passionately educating and supporting students in reaching their goals. So we have an experienced trainer who will definitely give you their best to reach you up to your goal. Then curriculum is designed by the IT experts. So it is crafted by professionals with extensive experience and expertise in IT industry. So it is designed to provide students with the latest industry relevant skills and knowledge. So as already I have discussed, आपको ये पता होता है कि हाँ ये C लैंग्वेज है, जावा है, प्रोग्रामिंग करते हैं, क्या करते हैं, बट उसका रियल टाइम एप्लीकेशन आपने किया ही नहीं होता है, राइट? सो दैट आइडिया यू विल गेट ओवर हियर. Then 100% placement assistance. So dedicated placement team is there to guide the student towards their career. So assisting students in resume building, interview preparation, providing unlimited opportunities till they are placed. So we have a dedicated placement team, okay, who will update you about the
openings, right? Upcoming drives. We do conduct drives at our end also. Okay, and you will get unlimited opportunities from our end till you get placed. So our spotlight, 100% placement guarantee, unlimited opportunities till you get placed. We have a dedicated placement team, regular placement weeks and job fairs, and daily and exclusive campus drive. That is the main thing. So you will not get only a training, you will get these things also. So you will get a 100% placement guarantee from our side. There is a dedicated placement team who will guide you, who will tell you where are the openings, and you will be able to get placed. So highest package, so as you know the packages nowadays, so highest package of 33 lakh per annum. So our top recruiters are, as you can see the list, some of the MNC companies are there, some small scale, medium scale companies are also having tie up with us or connect with us. So we have, as you can see the name, Accenture is there, Atos, Amazon, Bitwise, HCL, Cinecron, Zensar, HSBC. Okay, so these are the MNCs. Apart from that, we have some medium scale companies are also there. Okay. Okay. So what you can expect from this course? So daily hands-on code challenges, then topic-wise programming language revision aligned with the challenges, pattern-based problem solving, then you will get exposure to MNC level coding problems, then questions to simulate company coding rounds. So hands-on coding challenges, you will have topic-wise programming language revision and assignments are there. Pattern-based problems are there. Okay, so MNC level coding problems you will get exposure so that you will be able to crack the interviews. So questions to simulate company coding rounds. So company में आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करके लेंगे, आपका प्रिपरेशन करवाया जाएगा. Okay. So as I have given the brief introduction about a profound Edutech, now we'll switch to our actual technical session. This is about a profound Edutech which I have discussed. So you can contact us. You can see our address, which is this is the head of it office, which is located in Pune. Okay, so we have a website profoundedutech.com. You can see these numbers. You can call on these numbers. These are the official numbers. So as you can see, authorized training centers we have situated in Pune and Nasik. So if you want, you can take a screenshot of this slide so that at any point of time you want to contact, you can contact on these numbers. Okay. Now this data structure session will be free of cost. Okay, which will be conducted for next 2 weeks. For that, no need to pay anything. You can just join the live sessions and you can attend it. But if you want to get placed and you want a job opportunity, you want a placement calls from our side, then you can go for the different courses. Okay. So if you have any question or queries, you can contact on these numbers. Okay, fine. So now we'll go through the technical aspects now. This is related to Profound Edutech. So now we will start the technical session. Okay.
So as you are going to start the session, or you are going to learn data structure with C. Okay. So first of all, we are going to revise the students who have pursued um, pursued degree in computer science, IT training, right? They might be gone through the C programming language. Some of the candidates, those who are not aware of C, or maybe they are non-IT candidates and want to build a career in IT and want to learn the C, that is okay. You can learn at any point of time. Okay? So this is a revision session of a C, which I am going to start. Okay. So we are going to understand the internal architecture of a computer, then what is the use of a compiler, interpreter, and we are going to see the tokens of C. So this is a revision, so I'm going to quickly go through these concepts. Okay. So as you know, the internal architecture of a computer system, it consists of hardware and software. So on your machine, if you purchase a laptop or PC, it is only a hardware. If you want to work on that hardware, you need to install what? You need to install operating system. The operating system such as Windows, Linux, Mac. Okay. So that is a system software. Operating system is treated as a system software. The software which helps your hardware to function. जो आपके hardware को चलाता है, that is a system software. On system software, there is a application software. So we can have a different applications which you can run. So as you can see, on your laptop there might be a Windows operating system, or on your mobile there might be Android, iOS operating system, and on that operating system we use different applications. The applications such as like WhatsApp, Gmail, YouTube, and so on. So as you know, the categorization of software, system software and application software. System software is further divided into a category: translator, operating system, packages. So in translator, there are interpreters and compiler. In operating system, there is a distributed operating system, Windows operating system, Unix operating system. In packages, we have a linker, loader and editors, which we use in a programming basically. In application software, there are special purpose tools and application packages. Packages such as MS Office. If you take an example of MS Office क्या है? It is a package which provides us MS Word, MS Excel sheets, database PowerPoint presentation you can create with the help of MS Office. Special purpose softwares are, we have account, payroll and inventory. Now, why the programming language is required? As you know, machine doesn't understand our language. So if we speak any language like Hindi, English, Marathi or whatever language, machine doesn't understand that. Machine only understand the language which is in binary format, which is in the form of bits, which is in the form of 0 and 1. And as a user, we won't be able to speak in that language, right? So that's why we require what? Programming language. So for that, we require a need of a translator. So computer only understand binary language, which is a high level language. So computer only understand a binary language, and user only understand a high level language. So it is easy for a programmer to understand, and it contains English words. So we understand high level language, machine understand low level language or binary language rather. So the programs which we create, which is in high level language, will be translated and machine will execute that. And to translate that programs, we require compiler and interpreter. Compiler
scans the entire program, translates it into a machine code, and interpreter converts the code into intermediate code before converting it into a machine code. So each part of the code will be interpreted line by line. So if any error is found in the code, it will stop the interpretation at that point only. Okay. So history of C programming language. So before C programming language, there was low level languages such as Fortran, Algol 60, COBOL, Basic Simula 67, Pascal. ये सारे languages थे, but it was symbolic language, not code efficient, and very complex and lengthy code you have to write in these programming languages. So that's why C programming came into picture. So C is what? C is a procedural programming language. C is a middle level programming language. Why it is known as a middle level programming language? Because it is acting as a high level through functions, and it is acting as a low level through pointers. So we want to deal with the memory, so that's why it is dealing with the pointer. So as it's a combination of these two aspects, it's neither a high level nor a low level language. So C is a middle level programming language. Now, to learn any programming language, we must be aware about the grammar and the vocabulary, and that we are going to learn here. See, some history about C. So C invent किसने किया है? As you know, आपने theoretically ये चीजें पढ़ी होंगी maybe. It is invented by Dennis Ritchie in 1972. Features were derived from earlier language called Basic Combined Programming Language (BCPL), which is developed by Ken Thompson in 1970s. So it is invented for implementing Unix operating system. So main purpose C programming language invent करने का क्या था? Unix operating system develop करना था. That's why C language has been invented. So C programming language basics. So any language if you want to learn, not only C, कोई किसी भी type का language आपको अगर सीखना है, you must be aware of two parts. One is vocabulary and another one is grammar. So vocabulary means tokens, grammar means syntax. So if you want to learn any language, you must be aware of words and then you will make a sentences. Same way here, you must be aware of tokens and then you can create a syntax or program. So basic building blocks which are constructed together to write a C programs: identifiers, variables, constants, character set, keywords, data types and operators. So what is identifier? Unique identification given to the entity. So unique name given to identify units. So example, int num. Int is a data type which we are going to see now, but num is what? Num is an identifier given to the integer variable. Identifier means it is similar to our name. If you want to identify me, how you will identify? You will identify by my name. Same way, like int a. A is what? A is a identifier. Okay. Or if I am writing void main, this is a method. But main is what? Main is a identifier. Unique name given to the entity. That is known as a identifier. Okay. So variable name given to the location in a memory which is used to hold the value. So variable क्या है? The name given to the location in a memory. So the value of a C variable may get changed in the program. So C variable can hold values like integer, float point, character, etc.
So variable क्या है? Variable is used to hold the memory in the memory area. See, this is a memory. It will have some memory address and it will hold some value. So if you are writing int a equal to 10, then this 10 is the value, okay, inside this a variable with this memory address. Okay. Then we have some constants. So name given to the location in a memory which is used to hold the values. So values cannot be modified by the program once they are defined. So constant might be belonging to any type like integer, float point, character, etc. So जैसे कि pi की value throughout the program same ही रहेगी. तो pi की value क्या होगी? 3.14 which is constant. तो ऐसी कुछ वैल्यूज है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर कांस्टेंट रहेंगे तो हम उसे क्या करेंगे? कॉन्स्ट कीवर्ड से डिफाइन किया जाएगा. That are constants. Then we have a character set. So C language have a collection of different character set which contains alphabets, capital A to Z, small a to Z, digits 0 to 9. Special symbols are there. So आपके कीबोर्ड में जितने भी कीज है that comes under a character set. So C programming supports all the character set. Then there are different keywords. Keywords means reserved words and preserved words. So keywords are predefined words in C compiler, also known as a reserved words. So each keyword is meant to perform a specific function in a C program. So since keywords are referred names for a compiler, they can't be used as a variable name. So C language have 32 keywords. So which keywords C language supports? So this int, float, if, else, do, while, for, struct, pointer, sorry, not pointer, union. Okay, then we have enum, break, continue, right? तो ये क्या है? ये keywords है. It has some specific meaning. Okay, so you need to utilize it as per its purpose or meaning. Okay, so these are the keywords. So see, auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, go to, if, int, long, register, return, short, struct, type def, union, unsigned. So ये क्या है? Total 32 keywords है which you need to remember कि हाँ ये keyword है, it has specific meaning or purpose. Okay. Then in C there are different data types. There are primitive data types and derived data types and user defined data types. Primitive means char, int, float, double, void. So what is the purpose of this char, int, float? I will explain. Char will hold a character. तो आपको small a to z, capital A to Z कभी भी character define करना है. It has a data type character. For int, it holds a integer value. For float, it holds a decimal value. We have a boolean. Boolean means we have either true or false. True or false value चाहिए तो we have a boolean data type. Double we have, so double will hold a value like this. This is a double. So these are what? These are primitive data types. Then we have derived data types, which is array, pointer and function.
Array is collection of similar type of element. Pointer is used to store the address of another variable. Function is a set of programming logic, or we can say that it is a set of lines or bunch of code which we will use, okay, or which will perform a specific task. A line of code which performs a specific task, that is known as a function. Then user defined data types are enum, structure and union. Enumeration, structure and union. Structure will have a collection of different types of element in a structure. Union is also similar to structure, but there is a difference between internal memory related differences there. So these are the basic data types. So character occupies 1 byte memory, short int occupies the 2 bytes, integer occupies 4 bytes memory, long int occupies 4 bytes, boolean occupies 1 byte, float occupies 4 bytes memory, double occupies 8 bytes memory, long double occupies 8 bytes memory. So ये memory size कितना occupy करता है हर एक data type, that you can see. ठीक है. So declaration of a variable. How you will declare a variable? You will have a data type, variable name. This is a declaration. So data type, it can be int, or it can be float, or it can be char. This is the way you can declare the variable. And if you want to initialize it, you can initialize its value. There is a difference between declaration and initialization. This is the way to declare, this is the way to initialize. उसकी value आप define करते हो, that means you are initializing it. This holds a character. ठीक है, so this is what? This is variable. Variable मतलब क्या है? It holds this value at a specific memory location, and this value can vary. Variable क्यों कहते हैं इसे? Because we can change its value. आप इसकी value change भी कर सकते हो. So if you see here, integer data types, keyword int is used for declaring the variable with integer type. Floating data types, so variables of floating types can hold real values. Keywords either float or double is used for declaring floating type variable. Okay, so we have int var1, example float var2. Character type, keyword char is used for declaring a variable character type. So अभी जैसे मैंने यहाँ पे create किया या बताया, this hold integer, this hold float, this hold character. Now there are different operators in C programming language. So symbol that tells the compiler to perform a specific mathematical or logical operation. So there are different types of operator. Arithmetic operators, relational operators, increment operator, decrement operator, logical operator and conditional operator. So what is an arithmetic operator? Which perform a mathematical operation such as plus, minus, multiplication, division, percent, right? So if you see this, if two operands are there, means A variable which holds 10 value, B variable which holds 20 value, and if you want to do a addition, A plus B will give you 30, A minus B will give you minus 10, because 10 minus 20 will give you minus 10. A into B will give you 200. B by A will give you 2. B mod A will give you 0, because it is checking the remainder. So B by A will not give you any remainder. So remainder will be 0. So this this modular symbol mod is used for remainder calculation. Then there are relational operators. So suppose if we have two operands and we want to find out the relation between the two operands, we can take a help of this relation operator.
So equal to equal to. Now in C programming language, if you are writing equal to, it means this 7 value is getting assigned in a variable. But if you are writing here like this, means A is equal to B, means A की value and B की value is same. अगर आप सेम है कि नहीं चेक करना चाहते हो, you can take a help of a not equal to. So A is not equal to B. Okay, so A is equal to B, A is not equal to B, then greater than, check. Left operand is greater than right operand. So if yes, then the condition become true. So if A is greater than B is not true. तो अभी यहाँ पे देखो A is equal to B है क्या? नहीं, it is not true. A is not equal to B है क्या? Yes, it is true. A B से similar नहीं है. A is greater than B, it is not true because A B से greater नहीं है. A is less than B, no, A is not less, sorry, it is true. A is less than B, 10 is less than 20. Then A is greater than or equal to B, it is not true. A is less than or equal to B, it is true. A B से कम है, ठीक है. So दो एंटिटीज में रिलेशन देखना है तो ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो इस चीजों की आपको अगर क्लैरिटी पहले से ही होगी, यू विल बी एबल टू डू अ बेटर प्रोग्रामिंग, राइट. देन देयर आर लॉजिकल ऑपरेटर्स. So they evaluate each operation result in terms of 0 and 1. So logical operators are of types AND, OR and NOT. So in AND, it checks both the conditions. In OR, it checks one of the condition. If one of the condition is true, it will give you a result as true. And NOT, so it will not return a value. Or not in the sense, it checks and it gives you a value as per that not operator. So see, here x is 6, y is 3. So 6 is less than 3. Is it true? Yes. And y is greater than 1. Y क्या है? 3. 3 is greater than 1. Yes. So both the conditions are true. That's why it returns true. इसमें से एक भी condition false होता है तो result will be false. Then x is 6, y is 3. So C6 equal to 5 or y equal to 5. Definitely it returns false. Why? Because 6 is not equal to 5. मतलब 6 5 compare करोगे तो same नहीं है, and y 5 and 3 compare करोगे तो this is also not same. So it returns false. Then x equal to y. x क्या है? 6 equal to 3. So 6 3 से अगर compare कर रहे हैं, so it returns true. अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो 6 and 3 इक्वल है ही नहीं ना, सो नॉट ऑपरेटर लगाया है. सो 6 इक्वल टू 3 नहीं है, नॉट, सो इट रिटर्न्स ट्रू. सो दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स. देन वी हैव अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर. सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर is used to increment and decrement operator is used to decrement. So see, it has two types. Suppose if I have a value of A as 10 and the value of B as A plus plus, right? So this is post increment. So first it assigns the value, then it increments the value. What it means, first ये value B को assign होगी, तो A की value क्या है? 10. It assigns the value and then it will increment the value. So A की value क्या हो जाएगी? 11. ठीक है? As per that we have a pre-increment. Pre-increment में क्या है? Pre-increment. First it will do a increment, later on it will assign the
वैल्यू। सो पहले इंक्रीमेंट करेगा मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, बिकॉज a की वैल्यू क्या थी 10, एंड देन इट विल असाइन दी वैल्यू। सो b की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 11, because first it will increment, then it will assign a value. Here it will first assign the value, later on it will increment the value. Okay. Likewise we have a decrement operator. So here in decrement operator we have minus minus, here we have minus minus a. So first it will assign the value. So a की value पहले क्या होगी, सॉरी पहले वैल्यू असाइन होगी, तो b की वैल्यू पहले क्या होगी 10, and then it will decrement the value. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और यहाँ पे क्या होगा पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, सो 10 था ना, 10 का डिक्रीमेंट होके क्या होगा 9, एंड देन इट विल असाइन द वैल्यू. सो b की वैल्यू क्या होगी 9. ओके. So these are the increment and decrement operator. Then we have a conditional operator, which is ternary operator. Why it is known as a ternary operator? Because it has a three operands. Okay, it checks the condition. If the condition is true, it gives you a result as true, else it gives you a result, another result. Okay, so see, if the condition is true, result 1 is returned as result 2. So take a simple example. Suppose if I am checking if a is greater than b, question mark, then we have a colon b. ठीक है. So suppose if a की value है 10 and b value is 5, question mark, then 10 colon 5. So 10 greater than 5 है क्या? Yes. So it will print what? 10. अगर situation ऐसा है 3 is greater than 5 है क्या? No. So उस केस में क्या print होगा? 5. Okay, so this is a conditional operator. So these are the basic building blocks of C. अगर आपको C में प्रोग्रामिंग करना है, you must be aware of these operators, which is arithmetic operator, relational operator, increment operator, decrement operator, logical operator, and conditional operator. Arithmetic operations means you can perform addition, multiplication, subtraction. Relational operator means less than, greater than, equal to. दो operands में क्या relation है that you can check. Increment operator मतलब आप प्लस प्लस इंक्रीमेंट करोगे, डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस, डिक्रीमेंट करोगे, डिक्रीज करोगे. लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड और नॉट, एंड कंडीशनल ऑपरेटर which is known as a ternary operator. कंडीशन चेक की जाएगी. if condition is true, first result will get printed, else second result will get printed. okay, so C सीखना है तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. ऑपरेटर्स एंड different data types, keywords, character sets, constants, right? And if you know these basic building blocks, easily you can do a programming in C programming language. Okay. Okay. Okay, so now let us go through the basic program, first C program. Okay.
So here we are going to learn the basic C program structure, basic selection statement, branching statements. Okay. So let us understand the C program structure. So there is a documentation section, then link section, definition section, global declaration section, main function and subprogram section. Out of which these are mandatory block, link section and main function. This is mandatory. And documentation section, definition section, global declaration section, subprogram section, these are optional block. ठीक है? So I will create one C program and I will explain what these sections are actually. ठीक है? So the first C program I am creating in one editor which is Sublime Text. Okay? I will create one folder. In that folder I will save this program. C batch. I have given the name of the folder. In this folder I am going to save my program. So the editor is the editor which I am using. ये जो मैं use कर रही हूँ उसका नाम है Sublime Text. ठीक है? यही editor को use करना पड़ता है क्या? No, you can use any other editors also to learn the C programming language. Visual Studio है, VS Code. Then you can use Notepad also. You can use Sublime Text. Okay. So this is my first C program. So how to create a program? Go to new file, select the folder, C batch. अभी जो folder बनाया ये पहला program है, so demo.c. This is a basic C program. Okay. So ये कौन सा सेक्शन है प्रोग्राम का? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. ये जो मैंने लिखा है दिस इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. दिस इज नोन एज अ लिंक सेक्शन. So this is link section. This is mandatory section. This is main function. So this is main function section. And whatever you want to display or run, you can write in the main section. See, so I have created this C program. So ये कौन सा सेक्शन है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. यहाँ पे क्या लिखा जाता है? प्रोग्राम का नाम. In link section, we are including a header file. Without that, we won't be able to run our C program. So hash include ये प्री प्रोसेसर है. ये आपका प्रोग्राम इस मेन फंक्शन से लिंक करता है. stdio.h which is standard input output header files which we have declared over here. In main function, inside a main function we are using a printf. Printf is what? It is used to print the result on a console. Okay. So this is a predefined function. So hello all, happy Navratri. ये मैंने लिखा है and this I want to get on my console. तो ये प्रोग्राम रन करने के बाद मुझे देखना है. अब प्रोग्राम रन करने के लिए इन विंडोज मशीन यू विल रिक्वायर वन कंपाइलर. कंपाइलर का काम क्या होता है? टू कंपाइल योर प्रोग्राम एंड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. तो यहाँ पे आपको लगता है जीसीसी कंपाइलर टू रन द प्रोग्राम. ठीक है. तो प्रोग्राम रन करने के लिए स्टेप्स क्या है? Just a minute. I need to go to the folder structure where we have saved this program. तो यहाँ पे C batch, यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे प्रोग्राम सेव किया है. I will go to address bar and I will type a cmd which is command prompt. gcc file name dot c. फाइल का नाम क्या दिया है? demo dot c.
अगर कुछ सिंटैक्टिकल एरर मिस्टेक होगा तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्राम रन होगा. सो आई एम स्पेसिफाइंग हियर ए. ठीक है, ए इज टू गेट द आउटपुट. ये सिंटैक्स है, यही फॉलो करना पड़ेगा. सो सी, हेलो ऑल, हैप्पी नवरात्रि. ओके, so this is the first program which we have implemented in C. ठीक है. Now I will create another program to do the addition of two numbers. Simple program is that. So again, same step I am going to follow. Take a new file, save it with the name add.c. In documentation section, addition of two numbers. So we will be having a main function. Inside main function, we are declaring here three variables a, b, c. ठीक है, which holds a memory address, some memory address. ठीक है. Now I will initialize the value of a as 10. I will initialize the value of b as 20. Each line should end with semicolon. This is a syntax. C is equal to a plus b. And I want to print the result. So printf sum is equal to, I need to specify here %d, c. Now, what I have written this, that I will explain. आपको आउटपुट में क्या चाहिए? a plus b का एडिशन मीन्स 10 plus 20 should give you आंसर 30. वो आंसर इस c वेरिएबल में जाएगा. वो आंसर आपको प्रिंट करना है. तो प्रिंट करने के लिए सम इक्वल टू 30 ऐसे रिजल्ट आना चाहिए. बट ये रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा? इंटीजर. सो इंटीजर रिजल्ट प्रिंट करने के लिए वी नीड टू यूज अ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर. सी, अगर हम ये यूज नहीं करते हैं %d तो क्या होता है देखो. आई विल रन दिस प्रोग्राम gcc add.c. सी ए सम इक्वल टू, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ. रीजन इज यू नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट स्पेसिफायर. सो सी क्या कर रहा है? ये 10 plus 20 30 वैल्यू होल्ड कर रहा है, बट वो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है? सिंस यू हैवंट यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर. सो इसलिए यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा? %d. %d is a format specifier which gives you a output. So see, now you are getting the result. So अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से हैं? इंटीजर के लिए है %d. ओके, कैरेक्टर के लिए है %c. For float we have %f. Okay, so these are the format specifier. जब भी आप यूज करोगे पॉइंटर या एड्रेस आपको एक्सेस करना है तो यूज कर सकते हैं %p या %u यूज होता है एड्रेस के केस में. तो अभी इंटीजर रिजल्ट था इसलिए %d यूज किया. ठीक है. नाउ this is the program to get the input from the user. To get the result of the values which we have assigned. But now I want to create a program to get the input from the user. Okay, user से input लेना है. अभी a की वैल्यू 10, 20 फिक्स है ना यहाँ पे. I want to give the value 5, 7, 20, 50. मुझे अलग अलग वैल्यूज देने हैं. So for that, I need to create a program where user should be able to pass the input. ठीक है. So for that, see, add1.c. Program to add two user defined numbers.
यूजर डिफाइंड नंबर्स का मतलब है यूजर ने जो नंबर डिफाइन किया है उसका एडिशन होना चाहिए, ठीक है। सो हियर वी हैव हैश इंक्लूड stdio.h, we will be having a main. Then here I am declaring three variables a, b, c. So here printf enter two numbers, मतलब हमें a and b की वैल्यू एंटर करनी है, ओके। To accept those numbers we have a scanf function in C programming language. Printf is to print something, scanf is to accept the input from the user. So scanf के लिए क्या लगेगा, %d format specifier. %d क्यों लिया, again I am telling you the same thing. a b इसका डेटा टाइप है int के लिए क्या यूज होता है %d, कॉमा %a, comma %b. Ampersand is a address operator. Why I have used this ampersand? Because see, A, B, C. We have A variable, we have B variable, and we want to get the result in C. So A की वैल्यू क्या है 10, या सपोज जो भी आप वैल्यू पास करोगे, B की वैल्यू क्या है 5. तो ये 10 and 5 वैल्यू कौन देने वाला है, यूजर. तो इसका कुछ एड्रेस होता है, लाइक दिस इज अ 2000 एड्रेस, इट हैज अ 2004 एड्रेस. ये एड्रेस क्या कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है. तो यूजर ने जो 10 वैल्यू दी है वो इस एड्रेस पे जाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर, यहाँ पे भी एम्परसेंड ऑपरेटर. तो उस एड्रेस पे ये वैल्यू पास होनी चाहिए, ठीक है. सो इसलिए एम्परसेंड यूज किया है. देन वी वांट टू परफॉर्म एडिशन, सो c इज इक्वल टू a प्लस b. अब c में क्या होगा आपका रिजल्ट, सो टू प्रिंट द रिजल्ट printf sum equal to %d, comma c. Save it. So here gcc add1 dot c a. अब ये देखो ये मैसेज आया एंटर टू नंबर्स, ये दो नंबर्स पूछे हैं. तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर पास करेंगे इस वेरिएबल्स में जाएंगे एंड एडिशन होगा. सो अब मैं नंबर यहाँ पे पास कर रही हूँ, वन नंबर इज 20 एंड अनदर नंबर इज 30. सो द एडिशन इज 50. गेटिंग इट. सो scanf से क्या होगा, यू कैन और इट कैन एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर. And both these functions are available in this standard input output header file. So this is a compulsory to add this header file. इसके बिना आपका प्रोग्राम लिंक नहीं होगा मेन फंक्शन से और आपका प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा. ओके okay? So we have seen a basic program. Now we will see a control statements. Okay. So to decide what should be the flow of the execution of the program or to execute bunch of statements from the code, C provides three styles of flow control: selection, branching, iteration or looping. So selection statements, so by using these statements we can choose one branch or another. So following are the different selection statements: if else, else if ladder. So let us see this through program.
So I'm creating a program if example.c. This is a program for if example. ठीक है. Hash include stdio.h, हेडर फाइल जिसके बिना सी प्रोग्राम रन नहीं होता है. मेन फंक्शन, inside a main function here we have some condition. So suppose we are checking the age entered by the user. Age must be greater than 18. ये हमें condition check करनी है. ठीक है. So here I am declaring a variable age. अब age user से accept करना है तो यहाँ पे आएगा enter the age. ये मैसेज आएगा यूजर के सामने. तो आपको जो भी एज एंटर करना है वो एक्सेप्ट करने के लिए वी नीड टू यूज scanf. %d फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा. क्यों? बिकॉज सिंस वी आर यूजिंग अ इंटीजर. ampersand age. So if age is greater than 18, जो भी एज यूजर ने एंटर किया है वो अगर 18 से ज्यादा है तो मैसेज आएगा age is greater than 18. अदरवाइज कुछ मैसेज आएगा ही नहीं. ठीक है. सो इफ द कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, अदरवाइज ये ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं होगा. सो अगर एज 5 दिया है तो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 18 तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन ही नहीं होगा. योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट और एंड द एग्जीक्यूशन. बट हाँ, अगर एज आपने ज्यादा दिया है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा. सो सी gcc if example dot c, enter the age. मैंने एज दिया है 45. सो सी एज इज ग्रेटर देन 18. बट अगर मैंने एज दिया है 2, तो देखो कुछ आ रहा है क्या, प्रिंट हो रहा है क्या? नो. वाई? बिकॉज अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है. राइट. नाउ आई विल गो फॉर इफ एल्स. ठीक है. अब यही प्रोग्राम एल्स कंडीशन देके देखते हैं. सो इफ एल्स डॉट सी. ठीक है. सो एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स. So hash include stdio.h, we will be having main function. So here I am declaring age. So to accept the age from the user, first the message should be displayed, enter age. So to accept the age, we are using here scanf %d, ampersand age. So if age is greater than 18, अगर 18 से ज्यादा एज है तो ही वोटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ऐसा हम प्रोग्राम बना रहे हैं. तो यहाँ पे आएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. Okay. Else you are not eligible for voting. Save it. So I want to run this now. So gcc if else dot c, then a, enter the age. Suppose मैंने दिया 35. So yes, you are eligible for voting. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है? If this condition is true, this block of code will get executed. But if this condition is false, else block will get executed. So अगर यहीं पे हमने एज दिया है
4, you are not eligible for voting. So earlier प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक ही कंडीशन है, वो ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, वो फॉल्स हो गई तो कुछ रन नहीं होगा. बट यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, एल्स नहीं है ट्रू तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड भी हमने बताया है. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इफ एंड एल्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी वांट टू गेट द इफ एल्स इफ लैडर. ठीक है. सो हमने इफ देखा, if else देखा, now we will go for if else if ladder. So for if else if ladder, else if dot c. ठीक है. else if example. So here hash include stdio dot h. We will be having a main function. Inside main function, this is a program where we are going to accept the marks from the user and user को या स्टूडेंट को जिस रेंज में मार्क्स मिले हैं उस हिसाब से आउटपुट आना चाहिए. मतलब जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि मुझे प्रोग्राम पहले क्या करना है. मार्क्स, अब मार्क्स का रेंज क्या होता है, लाइक 0 to 100 के रेंज में स्टूडेंट को मार्क्स मिल सकते हैं. तो अगर 35 से कम मार्क्स है, लेस देन 35, तो स्टूडेंट का रिजल्ट आना चाहिए फेल. 35 to 50 के रेंज में मार्क्स है तो रिजल्ट आना चाहिए पास क्लास. 51 to 59 के केस रेंज में मार्क्स है तो रिजल्ट आना चाहिए सेकेंड क्लास. ठीक है. 60 to 74 के रेंज में मार्क्स है तो रिजल्ट आना चाहिए फर्स्ट क्लास. 75 प्लस अगर मार्क्स है, 75 till 100 या 75 till 100 के रेंज में अगर मार्क्स है तो रिजल्ट आना चाहिए डिस्टिंक्शन. सो ये मल्टीपल कंडीशन है. देखो, इस रेंज में मार्क्स है तो ये रिजल्ट आना चाहिए, इस रेंज में मार्क्स है तो ये रिजल्ट आना चाहिए, इस रेंज में मार्क्स है तो ये रिजल्ट आना चाहिए. तो मल्टीपल कंडीशंस जहां पे होते हैं वी कैन टेक हेल्प ऑफ इफ एल्स इफ लैडर. ओके. सो सी, इंट मार्क्स. ठीक है. सो पहले हम यूजर से मार्क्स लेंगे, स्लैश एंटर दी मार्क्स. सो मार्क्स एंटर करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ %d, एम्परसेंड मार्क्स. सो इफ यूजर ने जो भी मार्क्स दिए हैं वो मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है, मतलब 75 एंड 75 से ज्यादा, देन द रिजल्ट शुड बी डिस्टिंक्शन. ठीक है. एल्स इफ मतलब दूसरी कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन नहीं है, दूसरी क्या कंडीशन है, इफ मार्क्स आर लेस देन 75, 75 से कम मार्क्स है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, 60 to 74 के रेंज में अगर मार्क्स है तो रिजल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, द रिजल्ट शुड बी फर्स्ट क्लास. ठीक है. देन एल्स इफ the marks are less than 60 and marks are greater than or equal to 50. So 50 to 59 के रेंज में अगर मार्क्स है then the result should be second class.
else if marks are less than 50 and greater than or equal to 35. अगर 35 पासिंग क्राइटेरिया लेते हो तो, अगर 40 लेते हो तो 40 लेना पड़ेगा, तो 35 पासिंग क्राइटेरिया दिया है मैंने. यू विल फॉल इनटू विच कैटेगरी? पास कैटेगरी. ठीक है. और अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, राइट, ये रेंज में ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं होती है, तो इट विल गो टू लास्ट केस विच इज फेल. बिकॉज अगर किसी को इस किसी भी रेंज में मार्क्स नहीं मिलते हैं, 35 से कम है और ये कौन सी भी रेंज में अगर उसे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो स्ट्रेट अवे उसका रिजल्ट क्या आएगा? फेल. सो सी, अगर यूजर ने इनपुट दिया है 88, तो 88 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, रिजल्ट क्या प्रिंट होगा? डिस्टिंक्शन. किसी ने सपोज मार्क्स दिए है 64, सो 64 इस रेंज में आता है, जो 60 से ज्यादा है बट 75 से कम है, तो उसे क्या मिलेगा? फर्स्ट क्लास. अगर किसी ने मार्क एंटर किया है 51 टू 59 के रेंज में, सो 57 दिया है, तो क्या आएगा? सेकेंड क्लास. किसी ने अगर मार्क्स एंटर किए हैं 42 इस रेंज में आता है ना, 50 से कम बट 35 से ज्यादा, या अगर किसी को उससे भी कम मार्क मिला है 5-10, तो उसका क्या है? रिजल्ट फेल. Getting it? So if I run this program, see, gcc elsif.c, see, enter marks. तो मैंने मार्क्स एंटर किए हैं 88. See, the result is distinction. Again I will run this. Enter marks. मैंने मार्क्स दिए हैं 56. ये देखो सेकेंड क्लास आया. Again I am executing. सो मैंने मार्क्स दिए हैं 71, फर्स्ट क्लास आया. ये देखो, ये डिस्टिंक्शन था, 75 के ऊपर थे मार्क्स. 56 सेकेंड क्लास आया, 71 फर्स्ट क्लास आया. जो रेंज दिया है ना आपने, उसमें रिजल्ट आ रहा है. देखो, देन सपोज 45 पास क्लास. ठीक है. देन सपोज 52 सेकेंड क्लास. ठीक है. और अभी मैं यहाँ पे दे रही हूँ मार्क्स 12, फेल. तो ये क्या करता है? मल्टीपल कंडीशंस जब है आपके सामने, तो आपको क्या यूज करना है? एल्स इफ. मतलब इफ ये कंडीशन चेक करो, ये नहीं होती है, तो एल्स ये दूसरा चेक करो, ये भी नहीं हो रहा है, देन तीसरा चेक करो, ये भी नहीं हो रहा है, चौथा चेक करो. तो जो भी कंडीशन फुलफिल होगी वो ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, और कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो लास्ट में हम एक एल्स ब्लॉक लिख रहे हैं, वो एल्स ब्लॉक तो आपका एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. सो दिस इज नोन एज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. ओके. सो सी, if the condition is true, this block of code will get executed, else another block of code. Else if ladder, if the condition is true, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, एल्स इफ अनदर ब्लॉक ऑफ कोड. एल्स इफ ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज ये कोड रन हो रहा है. ठीक है. सो दीज आर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. Now we'll go for branching statements. So branching statement में क्या आता है? Switch case. Now how it works? If a programmer has to choose one among many alternatives, if else can be used, but this makes programming logic complex. So इतने सारे conditions देना बहुत बार मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं? Switch case. So switch, it checks the expression. जो expression specific case से match होगा, वो specific case रन होगा. ठीक है. So see, in switch case, expression is either an integer or a character. So if the value of switch expression matches any of the constant in case, the relevant codes are executed and control moves out of the switch case statement.
So if the expression doesn't matches any of the control constants in case, then the default statement is executed. तो स्विच केस क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस से मैच करता है, और अगर कोई केस मैच होती है तो ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, जो केस मैच नहीं होगी तो वो डायरेक्टली डिफॉल्ट में जाएगा. सो लेट अस सी दिस थ्रू प्रोग्राम. switch case dot c, switch case demo. ठीक है. So first hash include stdio dot h. We will be having main function. Inside main function we have so we will accept two numbers and we will do different operation on those two numbers. ठीक है. So a b ये दो numbers हैं, तो उसे accept करने के लिए %d %a %b. एम्परसेंड क्या है, एड्रेस ऑपरेटर, जैसे मैंने पहले भी बताया. सॉरी, स्कैनफ आएगा और उससे पहले मैं मैसेज दूंगी. प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स. ठीक है. अब इन नंबर्स पे आपको जो ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं. सो प्रिंटफ एंटर दी चॉइस. चॉइस कैसे दे सकते हो, अगर 1 चॉइस दिया है यूजर ने तो क्या करेंगे, एडिशन. ठीक है. 2 चॉइस दिया है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. 3 चॉइस दिया है तो वी विल डू मल्टीप्लीकेशन, एंड 4 चॉइस दिया है तो डिवीजन. ठीक है. सो चॉइस के लिए आई एम टेकिंग अ वेरिएबल ch. ठीक है. तो यहाँ पे आएगा scanf. चॉइस हम कैसे ले रहे हैं, 1 2 3 4 मतलब %d ही आएगा. %ch. ट्राई टू अंडरस्टैंड. a एंड b क्या है, दो वेरिएबल्स है जिसमें दो नंबर्स लिए जाएंगे, 10 20 30 40 समथिंग, और उस नंबर्स पे क्या करना है ऑपरेशन, वो चॉइस हम इस ch वेरिएबल में देने वाले. वेदर इट इज 1 दिया तो एडिशन होगा, 2 दिया तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 दिया तो मल्टीप्लीकेशन, 4 दिया तो डिवीजन. ठीक है. सो अब यहाँ पे आएगा स्विच स्टेटमेंट. तो यूजर का चॉइस है जो यूजर देगा, तो उस चॉइस से मैच करने के लिए हमारे पास अलग अलग केसेस हैं. सो वी हैव अ केस 1 जिसमें क्या होगा, एडिशन. सो प्रिंटफ एडिशन इक्वल टू रिजल्ट के लिए इंटीजर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर. यहाँ पे एडिशन किया जाएगा विच इज a प्लस b. तो ये एक केस बना दी हमने. सेम वे वी विल क्रिएट अनदर केसेस. केस 2, केस 3, केस 4. ठीक है. अब यहाँ पे केस 2 के लिए हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन. a माइनस b. देन हमें यहाँ पे क्या करना है, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है हमने, मल्टीप्लीकेशन का. सो मल्टीप्लीकेशन a into b, and then the last is division. So division के लिए क्या आएगा, a by b. ठीक है.
ओके, सो नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम. इतना पहले रन करके देखते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं. सो जीसीसी switch case dot c, सेमीकोलन मिसिंग है कहीं पे, तो यहाँ पे. ओके, सेव इट. सो 2 नंबर्स, सो मैंने एंटर किया 20 एंड 10. देन एंटर योर चॉइस, मैंने दिया 1. अब देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा एक लाइन में लिख के आ रहा है. मुझे अब क्या चाहिए, ये क्लमजी लग रहा है ना, मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए. तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज करते हैं /n. /n इज फॉर न्यू लाइन. ठीक है, तो ये क्या होगा, हर एक आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा इससे. सेव इट. नाउ आई विल रन दिस. कंपाइल करेंगे फिर से. एंटर 2 नंबर्स. 20, ये ए की वैल्यू हो गई. 10, ये बी की वैल्यू हो गई. मैंने दिया चॉइस. यू विल बी एबल टू सी अ चॉइस. a plus b, a minus b, a into b, a by b. Now the question is, अब मैंने चॉइस 1 दिया था ना, मैंने चॉइस 1 दिया था, तो सिर्फ एडिशन आना चाहिए था. ये सारा क्यों रन कर रहा है? सपोज मैंने 2 चॉइस दिया तो क्या होता है, देखो 20 10, मैंने चॉइस दिया है 2, तो देखो एडिशन हुआ क्या? अभी नहीं. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज अब केस 2 बताया ना आपने, सो 2 के आगे के सारे केसेस रन कर रहा है, राइट? तो अब मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक केस अगर आपको रन करना है तो यू नीड टू यूज विच स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक का यूज क्या होता है? इट विल कम आउट ऑफ द स्पेसिफिक केस, मतलब उतना ही केस रन करेगा और वो बाहर आ जाएगा. ठीक है, so if I run this now, see, so we enter 2 numbers 20 10. एंटर चॉइस, मैंने 1 दिया, ये देखो सिर्फ एडिशन आया. फिर से एंटर 2 नंबर्स 20 एंड 10. सॉरी, रुको एक मिनट. एंटर 2 नंबर्स 20 10. एंटर चॉइस, मैंने 2 चॉइस दिया, सब्ट्रैक्शन आ गया. देन एंटर 2 नंबर्स 20 10, मैंने चॉइस दिया 3, मल्टीप्लिकेशन आ गया. देन एंटर 2 नंबर्स 20 10, मैंने चॉइस दिया है 4, डिवीजन आ गया. तो ब्रेक हो रहा है, मतलब स्पेसिफिक केस से मैच होता है ये. फोर्थ केस क्या है? डिवीजन, तो सिर्फ डिवीजन करके देगा. बट व्हाट इफ आई एंटर समथिंग एल्स, मतलब मैं 2 नंबर्स दे रही हूँ 20 10 और मैंने चॉइस दिया है 7, कुछ नहीं हो रहा है. क्यों? बिकॉज 7 चॉइस का कुछ है ही नहीं. बट यूजर को कुछ नोटिफाई हो रहा है क्या कि अरे मैंने गलत चॉइस दिया है या कुछ प्रॉब्लम है. तो उसके लिए आप और एक केस डिफाइन कर सकते हो विच इज डिफॉल्ट. तो अगर वो किसी केस से मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट केस उसने रन करना ही चाहिए. सो इसमें आएगा इनवैलिड चॉइस. सो सी, इफ आई सेव दिस, टू नंबर्स 20 10, मैंने चॉइस दिया 5. सो ये देखो क्या लिख के आ रहा है, इनवैलिड चॉइस. सो अगर आप चॉइस सही नहीं दे रहे हो then it gives you a result as invalid choice. Okay, so this is a switch case. Now one more thing is, in switch case you can use a characters also. मतलब ये case 1 2 3 4 दिया है ना, इसकी जगह पे मुझे अगर कैरेक्टर देना है, लाइक चॉइस A B C एंड D, ऐसे करना है. अब ABCD क्या है? इंटीजर नहीं है, ये कैरेक्टर्स हैं. तो कैरेक्टर के लिए आपको ये CH जो होगा वो कैसे डिक्लेयर करना पड़ेगा? यू नीड टू डिक्लेयर इट एज अ कैरेक्टर.
तो ये कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर एक्सेप्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, %C। क्यों? बिकॉज ABCD कैरेक्टर आप दे रहे हो। और यहाँ पे कैरेक्टर्स कैसे देने पड़ेंगे, इन सिंगल कोट। So we need to give the characters in a single quote. ठीक है, and if I run this, see two numbers 20, 10, चॉइस देना है। अभी मैंने A दिया, एडिशन हो गया। अब मैं दे रही हूँ 30, 10, मैंने चॉइस दिया B, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अभी ABCD वाइज चल रहा है, बट चेंज क्या करना है हमें यहाँ पे, वी हैव टू चेंज दिस। ये कैरेक्टर एक्सेप्ट किया, इसलिए यहाँ पे कैर डेटा टाइप है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए %ch यूज किया है। एड्रेस ऑपरेटर एंड %C फॉर्मेट स्पेसिफायर मेन है, एंड इट विल एग्जीक्यूट अ स्विच केस। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक सिलेक्शन स्टेटमेंट्स which we have seen, selection and branching statement. Okay, now next we'll see a looping statements. So in C programming we have 3 types of loops, and why we use a looping statements, to do a repetitive task we take a help of a loops. Loop क्यों यूज किए जाते हैं, to do a repetitive task. So there are 3 types of loop: while loop, do while loop and for loop. Okay, so loops are used in performing a repetitive work in a programming. There are 3 types of loop: while loop, do while loop and for loop. So how while loop works, it first have syntax initialization, it check the condition, then block of code will get executed, and it has a increment decrement. Okay, so let us see this through example. मैं directly example through ही समझाती हूँ, so that you will understand it in a better manner. while.c, ठीक है, demo of while. We will be having a main function. So suppose I want to print a numbers from 1 to 10. ठीक है, ये रिपीटेटिव टास्क है ना, आपको क्या करना है, पहले 1, then 2, then 3, then 4, ये प्रिंट करते जा रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये वैल्यू इंक्रीमेंट करते जानी है, राइट। तो here initialization, first we will have a initialization. So int I will initialize as a 1. Then I will put a condition, I should be less than or equal to 10. So I क्या होना चाहिए, 10 से कम या exact 10 होना चाहिए. Then I want to print the result of I. %d, I want to print the result of I. And then we have a value increment. तो increment करने के लिए I++. ठीक है, so see, I will run this. So हम ये रन कैसे होगा, try to understand. I की वैल्यू क्या है, 1. It checks the condition. 1 is less than or equal to 10. कंडीशन ट्रू है क्या है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, I की वैल्यू. तो I की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1. Then I क्या होगा, इंक्रीमेंट. So I becomes 2 now. 2 less than 10 है क्या है, तो I की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2. Then I इंक्रीमेंट होगा, I becomes 3. 3 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. So on it will work. ठीक है,
तो ऐसे ये 10 तक प्रिंट करेगा. सो आई विल रन दिस. तो अभी देखो gcc while डॉट सी. तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी ये सारा एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है. आपको वो नेक्स्ट लाइन पे नंबर चाहिए तो यहाँ पे क्या करो /n. /n इज फॉर न्यू लाइन. सेव इट. आई नीड टू कंपाइल फर्स्ट. अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये आपको ऐसे प्रिंट करना है. i इक्वल टू i की वैल्यू तो ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो. सेव किया. आई विल कंपाइल इट, रन इट. सो सी. ठीक है. सो while लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप क्यों? बिकॉज ये आपको लूप में एंटर ही नहीं करने देता है अगर कंडीशन सही नहीं है तो. सपोज मैं देखो i की वैल्यू दे देती हूँ 15 एंड मैं ये प्रोग्राम रन करती हूँ. देखो क्या होगा. कंपाइल करेंगे, रन करेंगे. देखो कुछ आउटपुट आया क्या? नहीं. क्यों? बिकॉज i की वैल्यू आपने क्या दी है 15. 15 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या? नो. कंडीशन इज फॉल्स. कंडीशन फॉल्स है तो कुछ होगा ही नहीं, लूप में जाएगा ही नहीं. सो व्हाइल लूप क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप. ये आपको एंटर ही नहीं करने देता है. ठीक है. देन वी विल सी अ डू व्हाइल. डू व्हाइल इज exit control loop. So it will do some task and then it will check the condition. Okay. So let us see this. We will be having a main function. Inside main function, we will initialize. Then we have do. So we want to print the value of I /n I equal to %d. I की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं. I को इंक्रीमेंट कर रहे हैं. And here we are putting a while condition. So while I should be less than or equal to 10 and it ends with semicolon. ठीक है. तो यहाँ पे है इनिशियलाइजेशन. ये इनिशियलाइज की है हमने वैल्यू. यहाँ पे है इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है, और यहाँ पे है कंडीशन. ठीक है. सो इफ आई रन दिस, सी, सॉरी, डू व्हाइल करना था मुझे रन. डू व्हाइल डॉट सी. तो यहाँ पे देखो ये रन हो रहा है. अब ये क्या है? डू व्हाइल इज, this is exit control loop. Why it is known as exit control loop? Because it checks the condition afterwards. एटलीस्ट एक बार तो आपको प्रोग्राम रन करना ही है या लूप रन करना ही है. देन गो फॉर डू व्हाइल बिकॉज इट डजंट चेक द कंडीशन. यहाँ पे देखो मैं i की वैल्यू अब 15 करती हूँ तो ये क्या करेगा? डू लूप में आएगा, i की वैल्यू 15 रन करेगा, i को कर देगा 16 और फिर कंडीशन चेक करेगा 16 इज लेस देन 10 है क्या? नहीं. तो फिर से लूप में आने नहीं देगा, बट एक बार लूप को एटलीस्ट वो रन करेगा. राइट. सो इफ आई रन दिस, सी, डू व्हाइल. अब ये देखो i की वैल्यू है 15. क्यों? बिकॉज ये एंटर करने देता है लूप में. एटलीस्ट आपका लूप एक बार तो चलता ही है डू व्हाइल में. सो व्हाइल एंड डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है? व्हाइल पहले कंडीशन चेक करता है फिर लूप को चलाता है. कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो लूप में आने ही नहीं देता है. डू व्हाइल क्या करता है? इट गोज विथ द एग्जीक्यूशन. एक बार तो एटलीस्ट एग्जीक्यूशन करेगा और अगर कंडीशन मैच हो रही है तो पूरा लूप चलेगा. कंडीशन नहीं मैच होती है तो भी फिर एटलीस्ट एक बार आपका प्रोग्राम रन होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट विल गो फॉर लूप. So in for loop, the initialization, condition and increment decrement we write in a one line. ठीक है.
तो ये व्हाइल लूप जैसा ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाइल लूप में आप क्या करते हो, 3 सेपरेट स्टेटमेंट्स लिखते हो, मतलब इनिशियलाइजेशन यहाँ पे लिखा, कंडीशन यहाँ पे लिखा और इंक्रीमेंट यहाँ पे लिखा। फॉर लूप में क्या है, यू कैन राइट इट इन 1 लाइन, ठीक है। सो फॉर लूप डॉट सी, हैश include stdio dot h. We will be having a main function. So here for loop, अब देखो कोड कितना कॉम्पैक्ट हो जाता है, देखो I starts with 1, I should be less than or equal to 10, I plus plus. So here we are printing the value of I. सिर्फ इसका वर्किंग सेम ही है, I equal to %d, I. तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 1 प्रिंट होगी, सो I becomes 1. I कंडीशन ट्रू हो रहा है ना, 1 is less than 10, तो I प्रिंट हुआ, I इंक्रीमेंट हुआ, अब I क्या हो जाएगा 2, 2 less than 10 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, देन I इंक्रीमेंट होगा I becomes 3, 3 प्रिंट होगा, I फिर 4 होगा, कंडीशन चेक करेगा, कब तक करेगा ये, जब ये कंटिन्यू करते जाएगा 4 5 6, राइट, ये कंटिन्यू होता जाएगा, और जब I 11 हो जाएगा, देखो I अप टू 10 तो प्रिंट कर लेगा वो, I जब 11 होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या, 11 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये लूप से बाहर आएगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर। व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, डू व्हाइल में पहले एक बार एटलीस्ट प्रोग्राम रन होता है फिर कंडीशन चेक होती है, फॉर लूप में एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन डिफाइन किया जाता है। ओके just a moment. Okay, so this is the difference between the loops which we have seen. Okay, so we have seen the loops also. Okay, so as I have discussed, we are learning data structures with C. So first of all, for next 2-3 sessions, you will be having a revision on C. So मैंने आज क्या कवर किया है, बेसिकली द बेसिक्स, मतलब डेटा टाइप्स क्या है, देन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से है, यूजर डिफाइन कौन से है, उसका ओवरव्यू दिया। कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपको उसका वोकैबुलरी, ग्रामर आना जरूरी है। सो वी हैव सीन, वी हैव गॉन थ्रू डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स देखे हमने सी के, देन बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन से हैं,
सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स वी हैव सीन. ठीक है. अब सी में और भी टॉपिक्स है सच एज एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो वो टॉपिक्स आपके कल रिवाइज होंगे. ओके, सो यू कैन ज्वाइन दी सेम लाइव सेशन. ओके, and those who have joined late, okay, some of you might have joined the live session late, join किया होगा आप लोगों ने maybe. So for them again I am giving you the details. क्विक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं लास्ट 5 मिनट्स में एंड देन विल स्टॉप द सेशन. ठीक है. So see, those who have attended this session from start, you might be aware of this. जिन्होंने start में attend नहीं किया है, for them I am again specifying this. This is a free online data structure session arranged by the Profound Edutech. Okay, तो अभी जो session आप live attend कर रहे हो, that is a free session. Okay, but we do provide a different courses also. Okay, so we are established in 2030. We are Pune's leading IT training and placement company. We have a 5+ training centers in Pune and Nashik. We provide a retail trainings, college training, corporate training, placement assistance, ये services हम देते हैं. तो if you see, we have a 5 lakh students connect. 5 lakh से ज़्यादा students से हमारा connect है. 3,200 clients से हमारा connect है. 1,000 associated colleges से हमारा connect है. 10,000 campus, 10,000 से ज़्यादा campus drive हमने अब तक arrange किए हैं. सो फ्रेशर जो चैलेंजेस फेस करते हैं आजकल के डेज में कि एंट्री लेवल में जॉब नहीं मिलता है या बुकिश नॉलेज है बट प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है या सारी चीजों का नॉलेज है बट अनेबल टू एक्सप्रेस, अनेबल टू एक्सप्लेन, कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम है, देन वी नीड टू think about something, right? So we provide a job guarantee courses. तो हम डेटा साइंस में कोर्स प्रोवाइड करते हैं, फुल स्टैक जावा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, along with that we provide courses in .NET also. Okay, so job guaranteed courses में ये एक चीज है कि the course duration will be of 10 months. 4 month आपका ट्रेनिंग होगा, 6 month you need to do a internship with us. जिससे क्या होगा, इट ब्रिजेस द स्किल गैप, सो इट अलाइंस फ्रेशर्स विथ मार्केट नीड. सो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आपको रेडी किया जाएगा. इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, सो आपको भी ऐसे होगा कि यस आई हैव वर्कड ऑन समथिंग, आई नो समथिंग. फाइनेंशियल सिक्योरिटी है विच इज आरओआई. आरओआई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया है और आपको उसका रिटर्न मिल रहा है. गेटिंग इट? सो यू हैव इन्वेस्टेड इन अ कोर्स और you have studied well and you are getting a job. So it will build a industry trust. So employer को भी लगता है हाँ ये इस कैंडिडेट में कुछ कैपेबिलिटी है. Then you will get a faster employment. So job hunting cycle कम होगा, आपको easily jobs मिल जाएंगे. So we provide a courses as I already have discussed in Java, .NET and Python, full stack Python also. We provide courses in web development जिसमें एंगुलर, रिएक्ट, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप ये सारी चीजें कवर होंगी. नोड.js, एक्सप्रेस.js, MongoDB. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज आल्सो देयर. डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स कोर्स ये भी है. सो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कैसी है हमारे यहाँ पे? वी प्रोवाइड अ क्लास ट्रेनिंग. You will have a lab assignments. Based on that, lab trainers will guide you. We have a many projects on every module. And apart from that you require aptitude and soft skills, तो वो भी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं. रिगरस आपके असेसमेंट्स होंगे, मॉक इंटरव्यूज होंगे, जीडी राउंड्स होंगे, जिससे आप क्या होगे, यू विल बिकम अ एम्प्लॉयबल, राइट? तो जिस एरियाज में आप लैक कर रहे हो उसमें आप वर्क कर सकते हो. ठीक है. सो रेगुलर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन. सो हम प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं. आपको इंटर्नशिप लेटर मिलेगा, प्रोजेक्ट गाइडेंस दिया जाएगा. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनिंग मतलब आपके ग्रुप डिस्कशंस कंडक्ट किए जाएंगे. सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा.
सीनियर एक्सपर्ट्स से ट्रेनिंग मिलेगा आपको रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वर्क. IT एक्सपर्ट्स ने हमारा करिकुलम डिजाइन किया है, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू विल गेट 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस फ्रॉम अस. सो आप जब तक प्लेस नहीं होते हो तब तक हमसे आपको जॉब के कॉल्स मिलेंगे. So 100% placement guarantee from our side, unlimited opportunities till you get placed. We have a dedicated placement team to do this work. Regular job fairs, placement weeks we conduct. Daily exclusive campus drives we conduct. So these are our top recruiters if you see. So बहुत सारे MNCs भी हैं, medium scale, small scale organizations are also there who have a connect with us. So what you expect from course? Daily hands-on code challenges, topic-wise programming revisions, pattern-based solving, MNC level coding problems आपसे solve किए जाएंगे, questions to simulate company coding rounds. Okay? तो अभी आप जो डेटा स्ट्रक्चर का सेशन सीख रहे हो या देख रहे हो, that is live and that is free of cost. बट उसके अलावा अगर आपको बाकी कोई कोर्सेस को एनरोल करना है, then this is our contact details. So our main head office is at Karve Road, Pune. This is our mail ID. This is our website. Sorry, not a mail ID. This is a contact numbers. So ये आप उसका screenshot ले सकते हो. Okay. So you can contact on these numbers for further details. या कुछ आपको problem है या कुछ queries है तो you can contact on these numbers. And we have these branches. करवे रोड में हेड ऑफिस है, चिंचवड़ विमान नगर में भी हमारे ब्रांचेस है, नासिक लोकेशन में भी अशोक स्तंभ एंड कॉलेज रोड पे हमारे ब्रांचेस है. ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन. ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे. सो सब्सक्राइब अवर चैनल and continue for the further sessions also, further live sessions. Okay, thank you.